Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are learning economics of standard 12. Okay, chapter 10 industrial sector of GSEB board. Now we have already started this chapter industrial sector and we have completed the introduction and 3 points in the importance of industrial structure. Now today we are going to learn about the second part of this importance of industrial sector, that is where we have left. So there are 4 points which are remaining for the importance, but just quickly recapitulate. हम थोड़ा recapitulate कर लेते कि हमने 3 points के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने. So basically we have learned that contribution towards national income. So national income के अंदर contribution कितना था? Industrial sector was providing that during the independence time it was providing 16.6% towards the national income. So 1951 की बात करें, 16.6% was the share of contribution given by the industrial sector towards our national income, which increased to 27%. 27% बढ़ मतलब 16.6 से 27% हो गया in the year 2013-14 at a constant price. Now then we find that second point was about the employment. Now in employment the share of industrial sector was 10.6% in 1951 or independence time, and then after it increased to, we can say, 24.3%. Now in this particular increase it was most probably the small scale industries which has been developed. These small scale industries use labor intensive techniques. Now what is labor intensive techniques? There they try to use more of labors for producing different kinds of products in their मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. सो प्रोडक्शन यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर ज़्यादा लेबर्स काम करके मशीन्स की जगह पे, एंड दिस हेल्प्स to give employment opportunities to the different places or different industrial surrounding के industrial area के surrounding के अंदर जो भी people काम करने के लिए आ रहे हैं उन लोग को employment opportunities मिली. So this ultimately increase the employment opportunities. It helps the poor people to get jobs. It helps टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, बिकॉज जितने लोगों को काम मिलेगा उतने लोगों की इनकम आएगी. इतने लोगों की इनकम की वजह से वो लोग दे कैन इंक्रीज द परचेजिंग पावर, मतलब वो लोग ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे. सो दिस अल्टीमेटली गोज इन अ सर्कल विच इंक्रीज द टोटल नेशनल इनकम, एंड बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम तो डिमांड बढ़ेगी प्राइमरी नेसेसरी गुड्स की, और हमारा ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रोडक्शन होगा वो उससे ज़्यादा होगा. सो दिस पर्टिकुलर गिव्स राइज टू द national income also. And then after we studied about the third one, that is export income. Now in export income we have seen in the chapter 8 agriculture sector, where in the independence time the agriculture sector was giving 2/3 of the export income. कब? Independence time की बात कर रहा हूँ. But we find that it has reduced over the period of time, and gradually there was an increase in industrial and service sector. So industrial sector which has been there, industrial sector ने 2011 के अंदर सेक्टर ले लिया टू थर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जगह पे अभी 2/3 ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर बीन exported, and their income, foreign income is been gained, it has been saved, and it has been utilized for the development. But still we find that our imports are also more, so there we find that foreign income deficit we find. But still it has been processed कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स एंड उससे कम इम्पोर्ट करें. So this was the thing which we have seen. Now normally it says that if there is an industrialization in the particular country, मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वो कंट्री ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो सकता है, इन द सेंस दे कैन गेट इकोनॉमिकली डेवलप. नाउ द सेम पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न इन द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाउ टू गेट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सो फॉर दैट वी फाइंड दैट to gain more rapid and balanced economic, industrial sector plays an important role, because USA, Japan, Germany, Australia, also not Australia but you find that UK, so ये सब डेवलप नेशंस हैं. तो वो डेवलप नेशंस के अंदर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल? दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. द मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज देयर, द मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर स्किल लेबर्स एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड सेकेंडली द पॉपुलेशन इज लेस, सो वो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और द इनकम अर्निंग इज मोर. But still in India we find that though industrial sector is in a large scale, but we have large number of population waiting and competing for the particular kind of jobs. So उससे वजह से हम थोड़ा lacking में है. But still because industrial sector has developed from 1956 and 1991 industrial policy, you find that
this particular there was increase in the demand for primary goods मतलब necessary goods, because जैसे जैसे population बढ़ेगा वैसे वैसे basic necessary goods बढ़ेगा. So इससे हमारा economic development attain हो सकता है. ये हमने देखा है दूसरी countries के अंदर. In addition, if we try to increase our agriculture industrial product, it can be used for exporting, which we have seen in the last point. Now because of that we can save that money and you can utilize for the economic development. Now uske baad we can because more number of people is there, we can go with giving luxurious as well as एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स. ये किसके लिए? जो हाई क्लास ऑफ पीपल है, मोर देन और मिडिल क्लास हाई और नहीं तो लग्जरियस पीपल है, वो लोग ये अटेंड करेंगे. सो बिकॉज वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल we can go and give them about this luxurious and entertainment. So this demand also increases as a population is there. Again we find that government also has started establishing different types of public sectors जिससे our backward areas, rural areas or remote villages which are been there, they try to get developed. So ultimately when this particular remote areas are developed, the income for this particular people living in the remote areas will increase, and this increment will give birth or give rise to the employment as well as national income, and you find that overall the economic development can be attained. And this is how the other developed nation has already done in their previous times. So this is what we have to go. So balanced economic development says that industrial sector is much needed for rapid growth of economy. Then comes modernization of agriculture. This point also we have studied in the agriculture sector. Now how agriculture can be modernized? By using new ways, not traditional ways, because Indian farmers were using ट्रेडिशनल में मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन लोग पे ज़्यादा मशीन्स नहीं थी, बुलोक कार्ड्स यूज़ करते थे, ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो हमने ट्रैक्टर्स लाए बहुत सारे. तो ये सब चीज़ें से क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टूल्स आए. सो टेक्नोलॉजीज हेल्प वी हैव टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ट्रैक्टर प्रोवाइड किया, थ्रेशर प्रोवाइड किया, सब ने pumps provide किए. then after we find the different sprays were been provide for pesticides. so ये सब चीज़ों से क्या होता है कि हम फार्मर्स को बेनिफिट रहता है, देयर क्रॉप्स विल नॉट गेट इनटू फेलियर. सो क्रॉप फेलियर नहीं होगा इससे by using this all particular pesticides. Okay, by using fertilizers it can give more nutrition to the crops. So all this particular things, that pesticides, fertilizers, this thrasher, ट्रैक्टर्स, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज. ये मैन्युफैक्चर्स होते हैं इंडस्ट्रीज. सो इससे ये डिमांड बढ़ गया एंड इससे ये चीज़ों से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया, विच वी हैव लर्न इन द चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर. अगेन वी कैन से दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प very faithfully to the agriculture sector, where it has made possible to grow more and more number of crops. Clear? So इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगे उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल किसको मिलेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन. सो इफ एग्रीकल्चर सेक्टर वी डेवलप, इट विल गिव मोर नंबर ऑफ गुड्स और क्रॉप्स विल बी यूटिलाइज एज अ रॉ मटेरियल बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इट इज़ बीन प्रोड्यूस एंड उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम एक्सपोर्ट करेंगे. उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? एक्सपोर्ट, टू गेन द फॉरेन इनकम. सो दिस इज वॉट द अल्टीमेट थिंग विच वी आर डूइंग. नाउ द 6th पॉइंट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन करें? बाय डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम बिल्ड करें. इफ यू नो in the 11th standard we have learned that public sector was a big failure in the time of 1951 to 1981, where the public sector was not able to have much amount of growth. So that's why there was a privatization or private companies started coming up, and we find that public sector is the one who has developed basic and key industries. So they already started because country needs some of the basic industries like iron and steel, aluminium, cement. You find that for different मेकिंग रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब बनाने के लिए ये सब बेसिक की इंडस्ट्रीज चाहिए थी. सो हु मेड दिस वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर की बात करें, उन लोग ने क्या बनाया? हमारे लिए industries बनाई. So this industries help us to build different types of solid infrastructures for our country which help for the people. Again we find that this also provides the different vehicles for transportation. Hello, transportations के लिए टाटा ने बहुत सारी चीज़, महिंद्रा ने बनाई है. So you find that trucks are there, you find that buses are there, railways are there, aeroplanes are there, cars are there, two-wheelers,
आर देयर. सो ऑल दिस मोपेड्स से लेके बाइक्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए सब कुछ बना है, एंड जिससे हमारे पास ये स्ट्रेंथ बन चुकी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं? इट इज़ ऑल मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्रीज. येस, अगेन फॉर द डिफेंस सिस्टम, फॉर द आर्मी और फॉर द defense system of India or the government, we find that rifles, bullets, tanks, different arms, different different arms are being produced by the industrial sector itself, so that we are not able to purchase from other countries से purchase से better है कि हम हमारे country के अंदर ही ये सब चीज़ें बने, and इससे हमारा economy strong हो, इससे हमारा economic structure strong हो, and this particular things are again we can export to the other nation, other underdeveloped nation also. So all these particular things were developed, and जिससे हमारा economic structure strengthen हो गया, जिससे हम we can say this is the third largest economy which is in the army, or we can say. Then the last point comes change in social structure. Social structure की बात करें तो क्या, what does the social structure means? The mentality, the mentality, the we can say the discipline, everything has changed. So with the increase or with the introduction of industrial sector से क्या हुआ, the people got discipline, people got hard working, people got team working, competition, self dependence, cooperations. You find that understanding among themselves, different innovation skills, different research and development skills, institutional capabilities. तो ये सब चीज़ें डेवलप हुई किसके अंदर? पीपल के अंदर. हाउ? बिकॉज द रिक्वायरमेंट, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्स दिस टाइप ऑफ पीपल, तो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर बीन नीडेड, एंड दैट्स वाई यू आर लर्निंग दिस ऑल थिंग्स. yes or no? So discipline plays an first very important role. To on time, before time you should be reached to the work, then after you have to do the hard works for doing all this, producing this particular goods. Your industries will be competing with other industries, then after teamwork, then after we can say different types of things have been there, cooperations among them, team building जिसे हम achieve कर सकते. तो all these particular things are required, innovation skills, so that we can get one step ahead from the different industries. So all these things are been there in the social structure which increase again, जिससे हम किसको अवॉइड कर सकते हैं. सुपरस्टिशंस विच वर द इंडियन फार्मर्स सुपरस्टिशंस में बिलीव करते थे, फैटलिस्ट थे वो लोग, नैरो ऑर्थोडॉक्स नहीं तो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थे, जिससे वो लोग अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते थे, पुराने हाइलाइट्स में जीते थे. तो ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड व्हेन पीपल स्टार्टेड themselves moving to the industrial sector, and this particular things are values, new values, and we can say courtesies and everything has been gained in the industrial sector. So this have changed our lifestyle, this have increased the different moral values and skills in our people. So we find that this have inspired for economic development. इससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से ला सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन करते करते एक दिन हमारा कंट्री इकोनॉमिक डेवलप हो जाएगा. सो दिस वर द 7 पॉइंट्स विच वी आर लर्न फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो दिस 7 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंस आइडिया. इट कैन कम फॉर 3 marks, okay, most probably. So you have to learn, you have to go with this. If you find any doubt, any queries, you can just call or message me on my number, okay. Again, I will be going with the next topic very soon, so kindly write the notes, okay. Thank you.